Hello everyone, welcome to PTE 79 plus series, reading filling the blank number 10. It means that we have already covered 9 highly repetitive and predicted reading filling the blanks जो आपके पेपर में आ सकते हैं. In this series we discuss repetitive filling the blanks, and this is specially created series on your guys demand because with our strategies बहुत सारे students अपना targets को achieve कर पाए हैं. And in the ticker below you will be able to see their scores. जिन students ने इस week में अपना targets को achieve किया है, a lot of congratulations to them. And my name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now you can also achieve using the same technology which is artificial intelligence, क्योंकि Pearson artificial intelligence पे आपका scores evaluate करता है and हमारा software Marvel PTE का software भी artificial intelligence use करता है. और साथ के साथ we teach you वो strategies जिसके कारण आप सारे modules में, चाहे आपके reading हो, writing हो, speaking हो, listening हो, you are able to achieve your marks and you can score 79 plus in first attempt also. And that being said, let's get started. So PTE की reading is of 32 to 41 minutes and there are 5 question types. And सबसे ज़्यादा students को यही लगता है कि इसको जो reading का module है, the pronunciation is module, okay? Module. It is not module, okay? Right, so we have to improve our pronunciations also. So there are 5 question types. It is question, right? If you can understand written Hindi, this is chan. It's a rule. Whenever there is STION, it will be chan. It will be digestion, suggestion, question. Okay, so you have to remember these rules because आपको pronunciation भी improve करनी है अपनी. So reading and writing filling the blanks PTE का अब questions का order fix हो गया है. So सबसे पहले आपके reading and writing filling the blanks आते हैं, then multiple choice, multiple answers, reorder paragraphs, then reading filling the blanks, multiple choice, single answers. So this is how your reading is organized and this is the real scoring of reading. And you know that जो reading है सिर्फ वो 46 to 47 marks contribute करती है. उसमें से सबसे ज़्यादा important आपके reading and writing filling the blanks हैं, then reading filling the blanks हैं, and then reorders हैं. You can simply discard or avoid or eliminate multiple choice single answers क्योंकि वो 1 marks के हैं, then multiple choice multiple answers 3 marks के हैं. So this is how the 90 of reading is scored. And what is the strategy for reading filling the blanks? Based on our big data analysis, AI analysis, we found out that आप maximum 2 to 2.5 minutes ही per question दे सकते हो और पेपर में आपको time management खुद करनी होती है. अब 2 to 2.5 minutes में क्या आप सारे words समझ के words का meaning समझ सकते हो? This is the number 1 mistake. This is wrong strategy. You have to do skimming. Those students who take our online coaching from us, and we have students from all over the world, or those students who are taking coaching from our institute, we tell them how to skim. So आपको skimming करनी है. Then reading strategies, there is a slow method. Slow method में you know that you have to do it yourself. You have to identify your own mistakes. You have to do your own research and then you have to teach yourself. Everything takes time. इसलिए आप snail's pace पे improve करते हो. Then there is a fast method. जैसे rocket का boosters आपके बहुत जल्दी आपको space में पहुंचा देते हैं. Then you can achieve your target scores with our booster strategy which is 79 plus. And what is that fast method? The system identifies your mistake. Another thing which you have to remember, this is fast, not fast. Okay, we are here to improve our pronunciations also. So a system will identify your mistake and you will learn from a specially designed course and have your progress checked. And all these 3 things happen with our software. हमारा software which is powered by artificial intelligence tells you your own mistakes, आप क्या mistakes कर रहे हो. Then we have a specially designed scores for 79 plus. आपका targets को 79 है या 65 है या 58 है, उसके basis पे we have a designed course for you, specially designed, and then you can check your progress on our software also. So what is our Marvel's reading filling the blank strategy? We based our reading filling the blank strategy on 3 main things. One is context, second is lexical resource, third is grammar. Context में we pay attention to skimming, then forward reading, backward reading. All these things are covered in detail in our lectures, in online lectures or institute lectures. Then lexical resource में collocations, phrasal verbs बहुत important हैं and we are going to see their importance in reading filling the blanks along with vocab. Vocab आपका धीरे धीरे improve होता है, but our elite members will start getting collocations and phrasal verbs lectures also. And in grammar we provide grammar course जिसमें हम tenses cover करते हैं,
पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करते हैं, पैरेललिज्म कवर करते हैं, एक्टिव पैसिव कवर करते हैं, prepositions कवर करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम कवर करते हैं। Our software gives you two mode in reading, one is exam mode and second is time mode। जब एग्जाम मोड को ऑफ होता है तो आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, जैसे ही आप टॉगल करके एग्जाम मोड को ऑन करते हो, then our software shows you only those questions which are highly repetitive और predictive की जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, and based on that आप वो आंसर्स को क्रैम कर सकते हो, और अगर आपके वो क्वेश्चंस पेपर में आए तो एज्यूम करिए आपके कितने बेटर मार्क्स आएंगे क्योंकि आपको आंसर्स लर्न होंगे। देन द सेकेंड मोड इज टाइम मोड। जब इनिशियली है आप बिना किसी टाइम प्रेशर के अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो, बट रिमेंबर रीडिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करनी होती है। सो व्हेन यू टर्न दिस टाइम मोड ऑन, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, यू गेट अ स्लाइडर ओवर हियर जहां पे आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो 120 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस सबमिट हो जाएंगे, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, तो आपको यहाँ से अपने ऑप्शंस को ड्रैग करना होता है बार बार, यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑप्शंस लग रहा होता है आपको ये ड्रैग करना होता है। द सेम एक्सपीरियंस आवर सॉफ्टवेयर ऑल्सो गिव्स यू। सो दैट बीइंग सेड, this is our today's topic, reading filling the blank number 10. As usual, I'm going to give you 30 seconds and your time starts now. So now let's see its explanation. This is questionnaires to gather information from people is a well-used quantitative research method. It is considered to be an easy something, but in reality it is actually very difficult to design a good questionnaire. अब हम इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें कितने फिलिंग्स आपको करने हैं, 1 2 3 and 4, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे देखो ऑप्शंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलवेज रिमेंबर पीटी इज गोइंग टू गिव यू +3 ऑप्शंस, जितने फिलअप्स होंगे उसके आगे आप +3 लगा लीजिए। सो जैसे इसमें 4 हैं तो 4 + 3 7, सो यू हैव 7 ऑप्शंस दीज एंड द करेक्ट आंसर्स विल बी 4। सो अब आपको ये देखना है इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ईजी क्या, ओके। ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन, इन्फ्लुएंसेस, रिक्वायर्स, फैक्टर्स, रेट। तो अब आप इसमें दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वन इज यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, आप एक एक ब्लैंक को मैन्युअली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लाइक इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ईजी अपॉर्चुनिटी, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ईजी सिलेक्शन, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ईजी इन्फ्लुएंसेस, रिक्वायर्स, फैक्टर्स, ऐसे आप एक एक बार फिल कर सकते हो। बट यहाँ अगर आप ध्यान दें तो आप मोस्टली आपके नॉलेज से आप किस में कंफ्यूज होंगे, बिटवीन ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। बट अगर आप देखिए कॉलोकेशन होती है, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है इजी ऑप्शन। दिस इज नॉट एन इजी ऑप्शन फॉर मी, हम ऐसे ही कहते हैं दिस इज कॉलोकेशन। सो इजी ऑप्शन इज अ कॉलोकेशन एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो द कॉलोकेशंस अगर आपको अपने रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने हैं, एंड वी पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉलोकेशन इन आवर ऑनलाइन लेक्चर्स। So it is considered to be an easy option, but in reality it is very difficult to design, right? So this tarah se you have solved on the basis of your collocation and knowledge that you have put up option over here. Now let's see the second one. Question type, clarity of language, length of questionnaire and layout are just some of many. अब थोड़ी सी grammar use करिए, many है तो क्या होगा, plural use होगा। तो आप वैसे ही opportunity eliminate कर सकते हो, selection eliminate कर सकते हो, rate eliminate कर सकते हो। अब आपके पास तीन प्लूरल्स रह गए, इन्फ्लुएंसेस, रिक्वायर्स और फैक्टर्स। अब मैनी पीपल या मैनी थिंग्स हम ऐसे कहते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका यूज होगा नाउन। दिस इज आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉलेज विच वी टीच इन ग्रामर कोर्स। सो अब रिक्वायर क्या है, आपकी एक वर्ब है, तो आपने एक और एलिमिनेट कर दिया। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस विच आर इन्फ्लुएंसेस एंड फैक्टर्स। अब यहाँ पे वन ऑफ मैनी फैक्टर्स, अगेन कॉलोकेशन होती है, राइट। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय many factors, हम ऐसे कहते हैं, one of many factors, okay। So this is how we write, again the knowledge of collocation and little bit grammar knowledge. So what we are going to put is, we are going to put factors over here and moving to the next one, and which all need to be carefully considered when designing the questionnaire. Another issue
which, अब आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस हमारी ग्रामर कोर्स से कि विच के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगी, राइट, विच इज डूइंग समथिंग, विच इज समथिंग। सो अब आपको पता है, चाहे आप जैसे इज लगा रहे हैं, ये भी तो एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। सो अब आप इनमें से देखिए जो आपके पास ऑप्शंस लेफ्ट है उनमें से वर्ब कौन सी है। अपॉर्चुनिटी नाउन है, सिलेक्शन नाउन है, इन्फ्लुएंसेस प्लूरल है बट नाउन है, रिक्वायर्स वर्ब है, रेट नाउन है। तो आपको वैसे ही क्लैरिटी होगी, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है विच इज रिक्वायर्स। और वैसे भी हम कहीं कहते हैं एक और इशू जो कि थोड़ी अटेंशन रिक्वायर करता है, अटेंशन मांगता है। सो दिस इज हाउ वी से लाइक दिस, सो वी आर गोइंग टू पुट requires over here. ओके, इज हाउ टू इंश्योर अ हाई रिस्पॉन्स। अब आपके पास ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी, हाई रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, अ हाई रिस्पॉन्स सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, इन्फ्लुएंसेस तो वैसे ही नहीं हो सकता है, हाई रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस हो सकता था, इन्फ्लुएंसेस वैसे ही यूज नहीं होगा, प्लूरल नहीं यूज होगा। एक ही ऑप्शन बचा है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। और सेकेंड थिंग, रिस्पॉन्स रेट is a collocation. Again you saw how important are collocations plus grammar plus parts of speech knowledge for solving reading, filling the blanks. We are putting rate over here, and now let's see all the answers are correct and you have seen why your grammar is important. Now students ask कि sir आप grammar classes में क्या कराते हो? All our elite members get 25 to 30 lectures of grammar on parts of speech, subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules, sentences. So this is a complete exhaustive grammar course so that you can achieve your target score, चाहे वो 79 plus हो, 65 plus हो या 58 plus हो. And you can see in our software your previous attempts. हमारा software आपको बताता है which ones are the partially correct, which ones were the correct, ताकि आप खुद ही जब आपको revision करनी है आप partially correct वालों को जाके quickly revise कर सकते हो. How when you click anything you will see show me button. जैसे ही आप show me button पे click करोगे you will be able to see the options, the right options, ताकि आप उन चीज़ों को cram कर सको. Right, it's very important because PTE reading can be solved through two ways. What are two ways? One is cramming and one is knowledge. हम आपको knowledge भी build up करके देते हैं, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे हमने explain किया है और साथ के साथ आपको option भी देते हैं cram करने की. And you have to spend 2 to 2.5 minutes. First 30 to 60 seconds में you have to skim the content. In the next 90 to 120 seconds you have to look for clues, you have to find pointers and use your process of elimination. Always remember when you have to crack PTE you have to trust a person or a system because you are standing at the edge of the cliff and that person आप उनको अपना hand देते हो ताकि he can make you reach at top. अगर if you haven't selected a right person or a professional you may fall down. Fall down means you have to re-attempt to a PT, आपका target score नहीं आएगा. So whatever strategies we teach are validated and proven. What is the proof? नीचे आपको ticker में scores दिख रहे होंगे जो students ने इस week में अपना target score achieve किया है. So all our strategies work and consider Marvel PTE as the center and then you understand your concepts understand करने के बाद आप learn करते हो concepts को, then you implement them and then you perfect them. और perfect कैसे कर सकते हो? You can do it with feedback or correction and we offer feedback or correction service for all our elite members. We offer complete speaking correction for read alouds. It's inclusive in their package or you can say free of cost for elite members so they can do read aloud correction, repeat sentence correction, describe image correction, retell lecture correction. So complete speaking, complete writing, writing में summarize written text or write essay or listening में summarize spoken text. For all these we have our feedback और correction service जहाँ पे हम आपको बताते हैं आप क्या mistakes कर रहे हो so that आप अपनी mistakes को improve कर सको. And always remember this is a trophy which you have to win. Which is this trophy? Your target score 79 plus, 65 plus, 58 plus and we want you to do it in first attempt. But if you are not following or modifying our strategies you will not be able to win this, but if you are following our strategies you will be able to win this. And remember, learning a language is like going to the gym. The brain needs exercise, your brain needs exercise and it needs repetitive and regular exercise for it to develop. जितनी practice करोगे उतना improvement होगा. That's why we provide you the software, the platform जहाँ पे आप practice कर सकते हो. practice के साथ आपको evaluation ज़रूरी है, monitoring ज़रूरी है अपने performance की. And our software with artificial intelligence as well as send for feedback service. हम आपको evaluate करते हैं, आपकी progress monitor करते हैं. If you have any questions or doubts, you can WhatsApp us at 8699121121 and do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a daily basis. We give wings to your dreams.